अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, पिकनिक से आने के बाद मेरी शक्ल ज़रा बहुत फिटकार बरस रही है शक्ल पे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सबकी शक्ल पे फिटकार बरसने लगती है। हो रही तो बहुत काला हो चुका है कितना भूत लग रहा है। तो मैंने सोचा कि अब आज हाय अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा आज हमें ऑरेंज कलर का मेकअप लुक दिखाना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर की शर्ट भी पहनी हुई है। अभी ये ज़रा लाइट में ज़्यादा ऑरेंज नहीं आ रही, लेकिन है ये पूरी ऑरेंज कलर की। और ये दुपट्टा मैं चेंज कर लूँगी बाद में, अभी तो मैंने फिलहाल इस पर ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna... तो अब मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा दिया है, ठीक है। पहले वो इतना डार्क, ये अच्छा ये असल में कैमरे में बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है मेरी बेस, लेकिन जो है और ओरिजिनली मैंने ये बगैर उसके देखा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चुड़ैल लग रही है हाँ, अभी क्योंकि मैंने अक्सर ट्यूटोरियल्स वगैरह में भी देखा है कि ना बेस लगाने के बाद ना अजीब शक्ल लगने लगती है एकदम। जब मेकअप आप कंप्लीट करेंगे ना, ये सब कुछ आगे इन्हेंस करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मैंने इसको जो है ब्लेंड कर दिया है। अच्छा, मुझे जो है ना हाथ से ज़रा ब्लेंड करना ज़्यादा इजी लगता है। मैं पफ का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर भी है मेरे पास, लेकिन जितना अच्छा ब्लेंडिंग मुझे लगता है कि हाथ से होती है ना, पफ में इतना मज़ेदार नहीं लगता। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है पफ लगाने की या ब्लेंड करने के लिए, उसका ब्लेंडर की यूज़ करने की, वहाँ मैं कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि ज़्यादा ब्लेंडर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो ज़ाया हो, सारा का सारा तो उसके अंदर लग जाता है, हमारे मुंह पे तो कुछ लगता नहीं। ये देखिए कितना अच्छा मैंने ब्लेंड कर दिया। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ स्टार्ट। तो अब हम लगा रहे हैं इस पर फेस पाउडर। आज मैं कैमरे पे देख के ही मेकअप कर रही हूँ, सारा मेकअप शीशे में बहुत कम ही देख रही हूँ। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. सो फ्रेंड्स ये हैगा मेरा फाइनल लुक। और इतनी गर्मी में बाल वाल तो खोले जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये ज़रा ये इस तरह के जो मेकअप लुक होते हैं ना वो बाल खोलने के साथ ही अच्छे लगते हैं। चाहे तो यूँ करके हाफ करके बाल बांध सकते हैं, चाहे तो जूड़ा बांध लें। वैसे मेरे फेस पे ना, मेरा फेस इतना छोटा दूसा है तो मेरे फेस पे ना खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।